नमस्कार। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी एमएससी फाइनल के ऑप्शनल पेपर मैथमेटिक्स के ऑप्शनल पेपर जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस का अध्ययन हम इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं। जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शंस में हमने पीएफक्यू की स्टडी की, पीएफक्यू के डिफरेंशियल इक्वेशंस, पीएफक्यू के लिए कंटिग्यूअस रिलेशंस और कन्वर्जेंस कंडीशंस और बहुत सारी थ्योरम्स अपन इस वीडियो सीरीज में कर चुके हैं। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स द बार्नीज इंटीग्रल्स एंड द फंक्शन पी एफ क्यू के बारे में चर्चा करेंगे। द बार्नीज इंटीग्रल को हम पहले डिफाइन करेंगे कि किस तरह से बार्नीज इंटीग्रल होता है, किस तरह का इंटीग्रल, और पी एफ क्यू से बार्नीज इंटीग्रल का क्या रिलेशंस है। चलिए अपन शुरू करते हैं। Let us consider a function psi of s. Let psi s is a function. This is gamma of minus of s minus z raised to power s m is equal to 1 to p gamma of am plus s upon j is equal to 1 to q गामा ऑफ bj प्लस s। सबसे पहले हम इस फंक्शन की चर्चा करेंगे कि इस फंक्शन में क्या दिया हुआ है और क्या मतलब इसमें। तो यहाँ हम अगर साई एस के पोल्स की बारे में देखें, सबसे पहले चर्चा करते हैं पोल्स ऑफ साई एस। पोल्स ऑफ साई एस विल बी गिवन बाय फर्स्ट गामा ऑफ माइनस एस से मिलेंगे एंड सेकेंड अपन को पोल मिलेंगे गामा ऑफ ए एम प्लस एस एम इज इक्वल टू 1 2 एंड पी। तो ये दो गामा है, एक दो गामा जहाँ जहाँ इनफाइनाइट बन रहा है वो अपन फंक्शन साई एस के पोल्स होते हैं, अपन को पता है। तो गामा माइनस एस इनफाइनाइट बनेगा। गामा माइनस एस की अगर अपन बात करें given by these two and gamma minus s का पोल होंगे माइनस ऑफ न्यू। गामा माइनस इज इक्वल टू माइनस न्यू बाई गामा माइनस एस मीन्स माइनस एस इज इक्वल टू न्यू माइनस न्यू बन जाए, जहाँ न्यू आपका 0 1 2 एंड सो ऑन है। तो इट मीन्स s इज इक्वल टू न्यू एंड न्यू इज 0 1 2 एंड सो ऑन। तो अगर प्लेन के अंदर बात करें अपन, ये अगर अपने पास प्लेन है तो पोल अपने पास 0 s इज इक्वल टू 1 s इज इक्वल टू 2 s इज इक्वल टू 3, ये आपके पास पोल रहेंगे। तो यहाँ पर दिस इज पोल, दिस वन इज पोल एंड सो ऑन। रियल लाइन के ऊपर इसके पोल गामा माइनस एस से मिलेंगे। अब चलते हैं गामा ए एम प्लस एस की बात करें। पोल्स ऑफ गामा ए एम प्लस एस मीन्स जो ए एम प्लस एस क्वांटिटी है वो आपकी माइनस न्यू बन जाए एंड न्यू इज आवर एज यूजुअल 0 1 2 एंड सो इंटीजर से। इट मीन्स एस इज इक्वल टू माइनस ए एम माइनस ऑफ न्यू।
तो इसकी अगर पोल की बात करें अपने पास, तो इसके पोल आएंगे S इक्वल टू माइनस ए एम माइनस 1 माइनस ए एम माइनस 2 एंड so poles of gamma of am plus s is given by s is equal to minus am minus 1 minus am minus 2 एंड so. तो अगर प्लेन के अंदर बात करें अपन, दिस इज एक्स, दिस वाई, दिस इज जेड प्लेन, और कॉम्प्लेक्स प्लेन है. तो इफ ए एम इज दिस वन, सपोज माई ए एम इज दिस वन, suppose this is my AM, then minus AM is here, and minus AM minus 1 यहाँ होगा, minus AM minus 2 इस साइड में. तो इस तरह से अपने पास ये पोल आएंगे. अगर कोई मान लीजिए अपने पास गामा ऑफ A1 प्लस 2 की बात करें, अगर मेरा A1 यहां पर है, सपोज A1 मेरे पास यहां पर है, तो A2 मेरे पास माइनस A1 यहां पर आ जाएगा, और माइनस A1 नेक्स्ट पोल जो रहेगा वो माइनस A1 माइनस 1 माइनस A1 माइनस 2, इस तरह से ये पोल चलेंगे. तो अपने पास गामा ए एम प्लस एस, तो गामा A1 प्लस एस का पोल होगा, गामा A2 प्लस एस का पोल होगा, गामा A3 प्लस एस का पोल होगा. इनको अगर अपन हम प्लेन के अंदर दिखाने की कोशिश करें, तो जो सारे पोल आएंगे अपने पास A1 A2 AM के पोल इस तरह से आ जाएंगे, और जो S के पोल है गामा माइनस एस इक्वल टू 0, तो पोल ऑफ साई एस जो फंक्शन था उनकी अगर बात करेंगे अपन प्लेन के अंदर, तो ये कुछ इस तरह से आएंगे. गामा माइनस एस के कारण ये सारे के सारे पोल है गामा माइनस एस के. अगर मेरे पास A1 यहां पर है कहीं, तो माइनस A1 मेरे पास यहां पर आएगा, तो एक पोल ये रहेगा, माइनस A1 माइनस 1 माइनस A1 माइनस 2 एंड इनफाइनाइट इधर पोल जाएगा. अगर सपोज कीजिए कि हमारे पास A2 यहां है, सपोज दिस इज A1 A2, तो दिस इज माइनस ऑफ A2, और इसके जो पोल रहेंगे वो कुछ इस तरह से रहेंगे, माइनस A2 माइनस 1 माइनस A3 माइनस 1 एटसेट्रा. तो ये पोल दिए जाएंगे. अब जो हमने फंक्शन साई एस कंसिडर किया, फिर साई ऑफ एस दिया था अपन ने गामा ऑफ माइनस एस एंड m is equal to 1 to p gamma of am plus s upon j is equal to 1 to q gamma of bj plus s and minus z raised to power s. जब पोल की बात कर रहे हैं तो अपन रेजिड्यू की बात भी साथ साथ करेंगे. इससे मेरे पास हम कंसिडर करते हैं लेट अस कंसिडर
1/2 pi iota bn plus cn psi of ds. Let n be where psi of s is as usual जो अपन ने अभी लिया था, gamma of minus of s, gamma of m is equal to 1 to p, gamma of am plus s, j is equal to 1 to q, gamma of bj plus s, and minus z is for s. And n be a non-negative integer. The path and the closed path जो अपना bn plus cn है, cn is given below. तो देखिए अपने पास bn plus cn क्या चीज़ अपन कंसिडर करते हैं. हमारे पास this is our z plane and this is our pole of psi s, and another pole. Suppose my a1 is here, तो minus a1 minus a1 minus 1 minus a1 minus 2 and so on. अगर कोई पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है तो उसका पोल आएगा मेरे पास. सपोज ए के अगर यहाँ है तो दिस इज माइनस ऑफ ए के एंड पोल ऑफ दिस वन. ये गामा ऑफ ए के प्लस एस के पोल आएंगे. तो ये अपने पास पोल्स हैं सारे के सारे. तो हम बी एन कुछ इस तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि दिस इज रन फ्रॉम हियर इन दिस डायरेक्शन एंड moving this way. So the pole of gamma ak plus s keep left to the contour and it keeps all the point of gamma minus s to its right side. यहाँ से इस तरह से चले गई. इस तरह से ये बी एन मूव करेगा. तो दिस इज आवर बी एन एंड और सी एन विल टेक कुछ ऐसा सा ये अपना सी एन है. इसको मैं सेमी सर्कल मान लेना आप इसको. दिस इज ए सेमी सर्कल.
तो दिस वन इज आवर C of f. This is n, and then this is n plus 1. So this point is n plus half. N plus half. The semicircle Cn Cn is given by, or is defined by, S is equal to n plus half exponential of iota theta, and theta is less than equal to pi by 2 and greater than equal to minus of pi by 2. So this is a semicircle. S is equal to exponential of iota theta. This is radius. So n plus half is our radius, and e to power iota theta means this gives a circle, but we take the argument from minus pi by 2 to plus pi by 2. This is minus pi by 2 and this is plus pi by 2. So minus pi by 2 plus pi by 2. This is our Cn. And what about Bn? The path Bn is it moves moving in such a way that all poles of gamma minus of S, that is S is equal to 0, 1, 2, to its right side, and all poles given by gamma of am plus s, where m is equal to 1, 2, that will our p gammas, and all poles given by this kept left to the Bn. देखिए ये इस तरह से मूव कर रहा है यहाँ से कि माइनस आइटा इन्फिनिटी टू प्लस आइटा इन्फिनिटी तक है, चलिए फ्रॉम माइनस आइटा इन्फिनिटी टू प्लस आइटा इन्फिनिटी, तो माइनस आइटा इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, प्लस आइटा इन्फिनिटी ऊपर की तरफ चला जाएगा, in such a way that the all pole of gamma s, gamma minus s is equal to 0, given by gamma minus s, these are these poles, these are to the right of this contour path, and all poles of a1, a2, am kept left to the poles. a1 is our this one, so the poles of gamma a1 plus s are given here in this way. तो ये जो पोल्स हैं ये सारे के सारे इस कंटूर के इस पाथ के लेफ्ट हैंड साइड के अंदर रहेंगे। तो हमने एक क्लोज पाथ कंसिडर कर लिया Bn प्लस Cn का। तो ये जो इंटीग्रल अपन ने कंसिडर किया Bn प्लस Cn, तो इसके अंदर इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर हमारे पास सिर्फ पोल्स जो आ रहे हैं वो s = 0, s = 1, s = 2, s = 3, s = n, ये पोल इनसाइड द कंटूर है अपने पास। तो Bn की बात कर रहे थे हम,
left to the by n, this bn so bn becomes Barney's type path. This is Barney's type path, but it is terminated at s is equal to n plus half iota and s is equal to minus n plus half of iota. क्योंकि ये अपने रेडियस इसके जो लिए n प्लस हाफ लिए, तो यहाँ पर आपके पास ये जो पॉइंट है दिस इज n प्लस हाफ of minus iota and this point is n plus half of iota. This is imaginary axis, this is our real axis. So this is our Barney's type path, and as n tends to infinity, bn tends to b, that is the called Barney's path. That is Barney's path when it moves from iota infinity to plus iota infinity. So here we are taking the bn, instead of minus iota to plus iota infinity, we should take this is n plus half. ये मैं हटाऊँ एक बार, एक बार छोटा पाथ लिया अपने n plus half iota to n plus half minus of iota. So this is our path of this integral. Now here I am considering this integral 1 upon type iota bn plus cn psi of s ds, where psi s is this one and this function psi s is analytic in the closed contour bn plus cn. Since psi n psi s is analytic in the closed contour bn plus cn, except at the pole given by gamma minus s, and that is s is equal to 0, 1, 2 and n. ये है s equal to 0, 1, 2, n are the pole inside our closed contours. So हम इसको इवेल्यूएट करेंगे. अपने पास ये दिया हुआ है. अब हम कह रहे हैं कि psi s is analytic in this region but have some simple poles. So by complex analysis by residue theory of integration one upon 2 pi iota cfz dz is equal to 2 pi iota summation of r positive, where r positive is the summation r positive is
sum of residue at the poles of fz inside C, and C is closed contour in anti-clockwise direction. This is the results, and also we have results we have if fz has a simple pole at z is equal to a, then the residue at z is equal to a is limit z tends to a z minus a f of z. So here our function phi s is this one, and for this function, if you consider the residue of phi s will be evaluated on the poles inside the contour. The poles inside the contours are s is equal to 0. These are the poles. S is equal to 1, 2, 3 to n. So the residue at, so this implies रेजिड्यू थ्योरी से अपने पास आएगा 1/2 पाई आयोटा जो बी एन प्लस सी एन है, एंड साई ऑफ एस है, डी ऑफ एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ समेशन ऑफ रेजिड्यू. पहली बात माइनस इज दी बिकॉज बी एन प्लस सी एन वी आर कंसिडरिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस, so we will take this is equal to minus of summation of r positive, and residue at s is equal to k is given as limit s tends to k, s minus k, and psi of s. चलिए अपन लिखते हैं, रेजिड्यू निकालते हैं अपन अब. This is our psi s. First of all, we will write psi s in another form. Write psi s in the following form. Since we know that the gamma of z is equal to gamma z gamma 1 plus z formula, gamma of minus s with the result gamma of minus s is nothing but the gamma of minus of s and gamma of minus s plus 1 upon gamma of 1 plus s upon gamma of 1 plus s. And this one is 1 upon gamma 1 plus s, gamma z gamma 1 minus z is equal to pi upon sin pi z होता है अपने पास, तो दिस इज minus pi upon
sin pi of s. If this is z, gamma z, this is gamma 1 minus z is equal to pi upon sin pi of z. So pi of s minus ऊपर आ जाएगा बस. So psi s can be written in this form. This is our psi s. गामा माइनस एस को अपन लिख रहे हैं माइनस पाई अपॉन साइन पाई ऑफ एस एंड माइनस जेड एस टू पावर एस एम इज इक्वल टू 1 to p and gamma of am plus s upon gamma of 1 plus s and j is equal to 1 to q gamma of bj plus s. Since limit s tends to k, pi s minus k upon sin pi s is equal to minus 1 raised to power k. So the negative of the residue of psi s, the negative of the residue of psi s at s is equal to k is, इस रिजल्ट्स को अपन यूज करें अपन यहाँ पर साई एस के अंदर. मैंने आपको बताया था कि जो रेजिड्यू है किसी पर्टिकुलर पोल z इज इक्वल टू ए पर, दिस इज लिमिट z टेंस टू ए z माइनस ए एफ जेड होता है. तो उस केस के अंदर यहाँ पर जो रेजिड्यू आएगा दिस विल बी माइनस 1 पर के माइनस z के. चलो अपन इसको इवेल्यूएट करते हैं वापस. दिस इज साई एस, तो लिमिट s टेंस टू k s माइनस k एंड साई ऑफ s. दिस इज लिमिट s टेंस टू k. यहाँ मेरे पास बन जाएगा s माइनस k and psi of s is minus pi upon sin pi s and minus z s to power s. This is m is equal to 1 to p gamma of am plus s upon gamma of 1 plus s and j is equal to 1 to q gamma of bj plus s. And limit s tends to k, we know the value of this formula. From here we will get minus 1 raised to power k. So and minus z raised to power k, so this that will be finished, and this is equal to, and this is minus this minus sign, and this will use as minus 1 की power k minus z is to power k gamma of m is equal to 1 to p gamma of am plus k. नीचे मेरे पास आ जाएगा गामा ऑफ 1 प्लस के एंड j इज इक्वल टू 1 टू क्यू गामा ऑफ bj प्लस के. तो अपने पास माइनस 1 की पावर के गायब हो जाएगा, यहाँ से बच जाएगा z की पावर के एंड दिस वन.
this implies integral bn plus cn of psi of s ds is equal to we have considered here the psi s as a 1/2 पाई आईटा और है अपने पास यहाँ बार इसको कंसिडर किया तो दिस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेजिड्यू ऑफ दिस माइनस ऑफ द रेजिड्यू तो दैट इज बिकम्स m is equal to 1 to p gamma of am plus k upon j is equal to 1 to q gamma of bj plus k and gamma of 1 plus k and z raised to power k. And this is a residue at s is equal to k, but we take the sum of the residue, so sum of the residue will be this one, and the k is run from 0 to n. k is equal to 0 पर रेजिड्यू, k is equal to 1 पर रेजिड्यू, k is equal to 2 पर रेजिड्यू. तो हमने कंसिडर किया था कि इस इंटीग्रल का सम चूंकि बी एन प्लस सी एन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है इसलिए इसका सम ऑफ द रेजिड्यूज का माइनस रहेगा और सम ऑफ द रेजिड्यू का माइनस हमने अभी ये यूलेट किया है इस साई एस का सम ऑफ द रेजिड्यू. इट मीन्स व्हेन इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं दिस इज 1/2 पाई आईटा bn psi of s ds plus cn psi of s ds is equal to summation k is 0 to n this is gives us m is equal to 1 to p gamma of am plus k j is equal to 1 to q gamma bj plus k z की पावर k अपॉन फैक्टोरियल k. और इसके अंदर ऑन टेकिंग लिमिट n tends to infinity in that case bn becomes b Barney's type integral and integral over cn psi s ds this becomes 0. So we get 1/2 pi iota of b psi s ds or we say this is equal to 1/2 pi iota b psi s is our हमने लिया था माइनस गामा ऑफ माइनस एस m is equal to 1 to p gamma of am plus s j is equal to 1 to q gamma of bj plus s minus z raised to power s and d of s is equal to summation k is 0 to infinity. We are taking as n tends to infinity and this is m is equal to 1 to p gamma of am plus k upon j is equal to 1 to q gamma of bj plus k z की power k upon factorial k and this is nothing but the m is equal to 1 to p gamma of am upon j is equal to 1 to q gamma of bj and pfq am
B, Q and Z. So we get the Barnish type integral of this function's value of the Barnish type integral of this function psi s is nothing but the PFQ. So in the term of Barnish type integral, we can define our PFQ as a value of Barnish type integral. This is a very important topic for hypergeometric functions. हम ये देख रहे हैं कि हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन को एक इंटीग्रल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहाँ पर जो बी एन इंटीग्रल है, जो बार्निश टाइप इंटीग्रल बी जो है, वो अब मूव कर रहा है माइनस आइटा इन्फिनिटी टू प्लस आइटा इन्फिनिटी, और सी एन जो पाथ था वो अपना वैल्यू जो साई एस की वैल्यू है वो टेंस टू 0 दे रहा है। इसलिए हम अगर एक बार्निश टाइप का इंटीग्रल कंसिडर करें जो माइनस आइटा इन्फिनिटी से स्टार्ट हो, प्लस आइटा इन्फिनिटी तक मूव करे, और गामा माइनस एस के पोल्स है वो अपने राइट हैंड साइड में रखे, और गामा ऑफ ए एम प्लस एस के कारण प्राप्त होने वाले पोल्स को अपने लेफ्ट हैंड साइड्स के अंदर रखे, तो उस केस के अंदर इस इंटीग्रल के ऊपर इस फंक्शन साई एस डी एस की वैल्यू पी एफ क्यू रूप में प्राप्त होगी। थैंक यू।